अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम जो रिसेंटली एशिया कप हुआ है दुबई के अंदर, उस एशिया कप के हवाले से जो इंडिया और पाकिस्तान में एक डिप्लोमेटिक स्पैट डेवलप पहले से हो चुका था, उसका एक इजहार हमें स्पोर्ट्स के ग्राउंड पे नजर आता है, क्रिकेट के ग्राउंड पे नजर आता है, जिसका पीक कल हुआ व्हेन इंडियन टीम defeated Pakistan and they refused to take trophy from Pakistan's cricket board chairman Mohsin Naqvi, who also happens to be the Asian Cricket Board, Asian Cricket Council's chairman. और उनसे उन्होंने ट्रॉफी वसूल नहीं की। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वाज नरेंद्र मोदी साहब ने जो स्पीच की, जो ट्वीट की, उन्होंने उस ट्वीट के अंदर जो एक पॉलिटिकल सरकज़म यूज़ किया और एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की ट्वीट जो दैट वाज समथिंग बियॉन्ड हिज ओन डिग्निटी ऑफ ऑफिस। उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, दिस हैज़ टेकन रूट्स इन द ग्राउंड्स। ये गेम्स में भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और रिजल्ट भी सेम है, दैट इंडिया हैज़ वन। और उसको उन्होंने इस विक्ट्री को जिस तरीके से मिलिट्री ऑपरेशन से लिंक किया, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड, दैट्स वेरी अनसिविलाइज्ड as well as undiplomatic, and as I said, unbecoming of the prime ministership of any country. And that also reminds us of a very famous Imran Khan's tweet about Narendra Modi, जिसमें उन्होंने कहा था that when small men occupy the big offices, this is the kind of person that you see in India right now. Having said this thing, नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम एनालाइज करेंगे और हम देखेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड कि ये इस लेवल पे बातें क्यों पहुंची हैं, और फिर हम बात करेंगे क्या इंटरनेशनली कोई ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं जिसमें स्पोर्ट्स को इस तरीके से पोलिटिसाइज किया गया हो या इस लेवल तक पोलिटिसाइज किया गया हो। और फिर हम देखेंगे कि इंडिया ने जो ये स्टेप लिए हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इन तमाम मामलों के ऊपर हम आज की इस एपिसोड में बात करेंगे। तो नाज़रीन, अगर मैं बात करूं कॉन्टेक्स्ट की, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में मई में जिस तरह से वॉर हुई, उससे पहले भी पाकिस्तान इंडिया हॉस्टिलिटीज जो हैं वो पिछले ऑलमोस्ट एक डेकेड से सिंस 2016 बहुत सिग्निफिकेंटली डिटेरियोरेट हुई हैं। और 2016 से ऑनवर्ड देयर आर 3 मेजर राउंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट हैव हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 2016 में इंडिया क्लेम टू हैव कंडक्टेड सर्जिकल स्ट्राइक्स, पाकिस्तान डिनाइड दैट आफ्टर द टेररिस्ट अटैक इन उरी इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। फिर 2019 के अंदर जो है वो एक पुलवामा अटैक हुआ, जिसके अंदर 40 के करीब इंडियन पैरामिलिट्री की जो फोर्सेस थी, दे वर किल्ड। और उसके जवाब में इंडिया कैरिड आउट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक इन पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर, एंड वी रिस्पॉन्डेड इक्वली। और उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि अभिनंदन वाज अरेस्टेड एज वेल इन पाकिस्तान। फिर हमने देखा कि 2025 में अब दोबारा एक अटैक हुआ इंडिया के अंदर, पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसके अंदर 26 के करीब जो सिविलियंस थे, दे वर किल्ड बाय द टेररिस्ट्स इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। और उस अटैक के बाद इंडिया एज वी ब्लेम्ड पाकिस्तान एंड इट टुक मल्टीपल स्टेप्स, और इस हद तक चले गए दैट इंडिया ब्रॉट दैट कॉन्फ्लिक्ट टू द स्पोर्ट्स गेम एज वेल। और जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब ने खुद कहा कि दिस इज ऑपरेशन सिंदूर इन गेम्स और इन स्पोर्ट्स। बट नाज़रीन, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया इज बिहेविंग दिस वे। हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ इंडिया की जो बायलैटरल स्पोर्ट्स है, दैट सस्पेंडेड फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड। और जो ऑब्वियस बात है, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, आईसीसी इवेंट्स हैं, मल्टीलैटरल इवेंट्स हैं, उसमें हमारे जो है वो क्लैशेस होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिकेट के अंदर जो है वो चलता रहता। बट कभी ऐसा नहीं हुआ इससे पहले कि इंडिया पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात हुए हों जिस तरह से इस दफ़ा हुआ। पहला इंसिडेंट नाज़रीन तब हुआ जब पहला मैच था इंडिया पाकिस्तान का एशियन क्रिकेट कप में, जिसमें इंडियन टीम रिफ्यूज टू शेक हैंड्स, और पाकिस्तान कैप्टन वाज इन्फॉर्म्ड अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर द इंडियन डिसीजन और बिफोर द प्रोसीजरल हैंडशेक दैट वाज टू हैपन बिटवीन द कैप्टन्स ऑफ बोथ टीम्स। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड वेरी फियर्सली, और पाकिस्तान ने उसके बाद रिस्पॉन्ड किया, और हमने आईसीसी जो रेफरी थे उनके खिलाफ एक आईसीसी में कंप्लेन की। आईसीसी रिफ्यूज टू रिमूव हिम, एंड फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान थ्रेटन टू बाइकॉट इट, एंड आफ्टर द अपॉलॉजी फ्रॉम द रेफरी, पाकिस्तान डिसाइडेड टू गो अहेड विद द नेक्स्ट मैच। सो पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड। फिर दूसरा मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान में, अगेन इंडिया डिडंट शेक हैंड्स विद पाकिस्तान। और फिर जो कल हुआ, जो फाइनल था एशिया कप का, India had a narrow victory against Pakistan. India deserved a sports victory. That makes sense to us. But उसके बाद again India ना सिर्फ refused to shake hands, बल्कि चूंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं, he's Pakistan's interior minister and PCB chief Mohsin Naqvi, and he was supposed to distribute trophies and medals to the cricketers, but Indian team refused to come on the stage to get that, और फिर obviously Indian team को जो है वो नहीं दी गई ट्रॉफी। अब उस कॉन्टेक्स्ट में दैट वाज वेरी मच अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट ऑब्वियसली। और उसके बाद हम देखा कि जो नरेंद्र मोदी साहब की जो ट्वीट थी, दैट वाज द हाइट ऑफ xenophobia and fascist behavior of any leader around the world.
और ये जो स्टेटमेंट है ऑब्वियसली बात है, इट डजंट मैटर, उनकी स्टेटमेंट मैटर नहीं करती, बट दे रिफ्लेक्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, एंड दिस स्टेट ऑफ माइंड दैट ऑपरेशन सिंदूर, a military operation taking place in the sports grounds, can only be a vision and can only be acknowledged by a fascist leader like Narendra Modi. अब नाज़रीन इसके ऊपर आते हैं कि क्या ये तारीख में पहले कभी ऐसा हुआ है? इस हद तक मैं कहूँगा कि इतना मीन लेवल तक तो कभी कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया, इतना अनप्रोफेशनल, अनसिविलाइज्ड बिहेवियर तो कभी नहीं किया गया, बट ऑब्वियसली पॉलिटिक्स हैज बीन पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स इन द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट्स एज वेल। मैं बहुत पुराना नहीं जाऊँगा, बट एज रिसेंटली एज इन द लास्ट पीरियड ऑफ द कोल्ड वॉर 1980 में मॉस्को के अंदर ओलंपिक्स होने थे, जिसमें दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा बाइकआउट किया गया बाय द यूनाइटेड स्टेट्स लेड 60 स्टेट्स ने बाइकआउट किया था मॉस्को में, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। और उसके बाद हमने देखा कि उससे पहले भी बहुत सारे बाइकआउट होते। अच्छा, उसके बाद 1984 में जब लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होने थे तो सोवियत लेड बाइकआउट किया गया था, सोवियत अलायंस ने यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, लॉस एंजलिस के अंदर। उससे पहले भी हमने देखा कि जो अपार्थाइड के हवाले से भी बाइकआउट किए गए न्यूजीलैंड के अंदर स्पोर्ट्स का, ओलंपिक्स का, उससे पहले भी बहुत सारे बाइकआउट्स किए गए, एक कंपेन्स चलती रहीं बाइकआउट्स की, बट बायलैटरल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा वाक़यात तो नहीं हुए, बट दिस द पीक ऑफ इट एंड दिस द मीनेस्ट ऑफ ऑल द बाइकआउट। दिस वाज नॉट अ बाइकआउट, इंडिया कुड हैव बाइकआउटेड इट, they chose to play, but instead of then once you are in a field, then behaving like a cricket team and behaving like a sports person, instead they chose to bring politics on the ground, which was very unfortunate. नाज़रीन इसके ऊपर आते हैं कि जो बायलैटरल से मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा इंडिया 2012 से पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल स्पोर्ट्स नहीं गेम कर रहे, और बायलैटरल गेम्स ना करना भी एक पोलिटिसाइजेशन है, बट अगेन इट इज समथिंग दैट कुड बी acceptable, that could be manageable, that could make some sense, that you don't want to make interaction, it's kind of boycott which makes sense, but coming into the ground and behaving again, this is unacceptable. अब नाज़रीन आते हैं कि इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, why this is important, why I'm being using some harsh words on this boycott and the way India actually went for this thing, why it is important, because this is a step that is likely to create multiple impacts. One is obviously बात है, this is likely to set a precedence जो कि बड़ा dangerous precedence है. Obviously if you can behave rudely and rudely in this way for one reason or another reason, Pahalgam is a terrorist attack, everybody says that, we said it, I said it, state of Pakistan said it, and state of Pakistan publicly acknowledged that we are willing to cooperate with India, and we are willing to help India in finding out the culprits of that incident. Despite that, उसको एक्सक्यूज बना के आप स्पोर्ट्स के अंदर लेकर आना, इट मीन्स कि फ्यूचर में क्या किसी और वजह से बाइकआउट नहीं किया जा सकता, क्या इस तरह का जो अनबिकमिंग ऑफ अ स्पोर्ट्समैन का जो स्पिरिट बिहेवियर है, क्या ये दोबारा किसी और वजह से नहीं आ सकता? इट कुड बी मे बी आफ्टर ट्रम्प इम्पोजेस टैरिफ को बहाना बना के किया जा सकता है, मे बी आफ्टर फ्यूचर में जाके किसी जगह पे आप यूएन में इंडिया के हक में वोट नहीं डालेंगे तो इंडिया उसको बना के बाइकआउट कर देगा, या उसको बना के एक अनसिविलाइज बिहेवियर करेगा. वेयर वुड दिस बिहेवियर स्टॉप? What is this lines that have to be drawn before a state commits like these kind of acts? ये important question Nazeen, and this is likely to set a very bad precedent, not just India-Pakistan relationship, but regionally and globally. Another impact is that India has been exposed as a bully, rightly said by Pakistan's representative in the UN General Assembly that India is acting as a regional bully, and now that they are using the same bully behavior in the sports field as well. और वहाँ पे एक bully का जो behavior है, this is something that is unacceptable, and this is likely to create a sense of political mindset among the leaders who take decisions in the sports bodies, चाहे वो कल फीफा का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हो, चाहे वो हॉकी का हो. जब फ्यूचर में कोई भी मैच हो रहे होंगे या उसकी मैनेजमेंट की वजह से डिसीजन हो रहे होंगे, तो पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो सामने नजर आएंगे. हाउ कैन नाउ we believe that ICC will be a neutral body, a sports body, when it will be headed by the same person who also heads the Indian Board of Control in India. So ultimately, any decision by the ICC are definitely, we already knew that, but definitely now there is more than just the evidence that this BCCI, which dominates the ICC, will likely be taking decisions, and its decisions are political and not no longer a sports decision. So एक जो neutrality of the sports है, that has been damaged.
बिसाइड्स दैट एक और जो इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है नाजरीन, दैट इज द फैक्ट दैट इंटरनेशनल एक एरिया ऐसा था जहां पे हम कह सकते थे कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके लिमिटेड इम्पैक्ट थे, दैट वाज स्पोर्ट्स, एंड स्पोर्ट्स यूज्ड टू यूनाइट पीपल, and it has united even India Pakistan despite 2016 episode, 19 episode. India Pakistan have been engaged in some kind of manageable relationship, but this has broken all the norms. Therefore, I believe that the only sphere which was not politicized in international politics was the sports, and now that it has been politicized to that extent, which is not just boycott, it is a kind of acrimony, it's like of animosity. और मैं नहीं समझता कि इसके बाद पाकिस्तान और इंडियन जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके दरमियान में जो एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रहे हैं वो मौजूद रह सकते हैं या वो बढ़ सकते हैं, हिस्ट्री टेल्स अस। बट मेरा नहीं ख्याल इस एपिसोड के बाद से स्टेट टू स्टेट का मामला नहीं रहेगा, इट हैज बिकम अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल टू पीपल, इंक्लूडिंग द पीपल हु वर मेंट टू create bridges rather than to create divisions. But this is something that is unprecedented, and sports is likely to create more divisions than it has created ever in the history of the world. Another impact that I could see over here is, Nazreen, the rising nationalism. Obviously, the way Indian cricket team behaved was the result of a strong nationalism, the Hindu nationalism, BJP-led nationalism in India. But this wave is likely to be reciprocated on the other side of the border in Pakistan as well as among the global powers, globally. सो कहीं ना कहीं पे जो स्टेट्स हैं वो उनके अंदर नेशनलिस्ट प्राइड to the extent of the xenophobic behavior that is likely to be perpetuated, and that's why we believe that despite the defeat पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट टीम के हवाले से हमें इंट्रोस्पेक्शन का मौका कम मिलेगा, rather we would see that this behavior, this tournament more from Indian aggression than from the sporting skills or cricketing skills. So therefore, जो खामियां भी होंगी क्रिकेट टीम के अंदर, they will likely be ignored, and we will have to back them up mainly because of the nationalist tendencies. So nationalism will be on the peak across the border between India and Pakistan, not just between both states, but the other states as well. Last but not the least, Nazreen, another impact will be on Pakistan. Obviously, Pakistan will be under greater pressure to respond in kind or in some ways, and I don't know how will Pakistan respond to these things, but definitely we might expect further escalation of the sports relationship between Pakistan and India, most likely coming in one form or another form, which is again kind of a sports escalation ladder that is likely to grow further in the coming months and years. अब आते हैं ना जी लास्ट पॉइंट के ऊपर, लेसन्स क्या है पाकिस्तान के लिए। वन ऑफ द लेसन इज दैट पाकिस्तान नीड टू अंडरस्टैंड दैट फ्यूचर वॉर इन इंडिया between India and Pakistan is not just going to happen. The only question that we need to ask is when is this going to happen? Because the kind of move that India shows are the extreme versions, and जब इस लेवल पे चीज़ें चली जाएं तो वॉर को अवॉइड करना नियर टू इम्पॉसिबल होगा. So for me, this is one of the early signs of the looming direct war between Pakistan and India. Scale could be debated, intensity and timing could be debated, but we cannot deny that the war between India and Pakistan is unlikely. It is highly likely that Pakistan-India conflict will transform, will trigger a direct conflict between Pakistan and India. Sports पे जो behavior है वो broader, अगर sports पे ये behavior है, we can well imagine politically what will be the thinking, militarily what will be the planning, and उनकी जो public opinion है वो किस हद तक एंटी पाकिस्तान जा चुका हुआ है, और एक वॉर की पॉसिबिलिटी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड इज जो लेसन नाज़रीन वो है स्पोर्ट्स के वाले से. पाकिस्तान नीड टू इग्नोर द इंडियन नेशनलिस्ट बिहेवियर एंड द क्रिकेट टीम नीड टू फोकस ऑन इंप्रूवमेंट. वी नो दैट पाकिस्तान डिजर्व्ड the second place. We never deserved the first place because of, not because India is better, also because India is better, but also because Pakistan lacked the professionalism in our sports. और मैं अगर ब्रॉडली बात करूँ, पाकिस्तान में वैसे ही इंस्टीट्यूशंस का जो है वो फुकदान है. हमारे इंस्टीट्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, एज एन इंस्टीट्यूशन काम नहीं करते, एज इंडिविजुअल्स काम करते हैं. दैट्स अ जनरल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, बट दिस इज मोर ट्रू अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम एज वेल. देयर माइट बी एक्सीलेंट इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज, बट टीम एंड क्रिकेट एज एन इंस्टीट्यूशन इज नॉट फ्लरिशिंग. पाकिस्तान नीड्स टू वर्क ऑन दैट इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग. और अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता तो ट्रॉफी लेने वाला एपिसोड शायद ना होता, बिकॉज वी वुड हैव बीन टेकिंग द ट्रॉफी, और ये इंडिया के बाइकआउट वुड नेवर हैव मैटर्ड एज सच. So therefore, I think the best revenge that Pakistan could take is by improving the set of skills and in building cricket as an institution rather than individual specific.
It also gives us another lesson, Azim, that is professionalism. We know that cricket, like any other profession, is a profession. It must be governed by the professional rules, it must be governed by the professional norms, and it must be held by the people who are professional. And giving interior ministry the post of the PCB chairman, I think that is likely to create overburden on the person and the institution, and therefore specialization demands that there has to be a kind of PCB Pakistan Cricket Board, a person who should some way related to sports, चाहे वो क्रिकेटिंग हो ना हो, बट स्पोर्ट्स अफेयर्स और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का जो एक्सपीरियंस है, दैट शुड बी द प्रायोरिटी, एंड व्हेन वी गेट स्पेशलाइजेशन, दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग इट एज एन इंस्टीट्यूशन. Last but not the least, Nazreen, Pakistan also needs to understand that in the first stage, when India refused to shake hands, Pakistan should have been okay with that. Pakistan media was very hyped by it. Pakistan society was very hyped by it. But I don't think if India refuses to shake hands, it's we should refuse the same to India. What was wrong? Why we are so much interested in shaking hands with India? There shouldn't be any problem. Shaking hands is a mutual consent that always happens when there is a mutual consent. If one party is unwilling to, the other party should not mind that, and we should have simply ignored that. Although the manner in which they refuse, that is questionable, that is objectionable, but that should have been settled there. But by increasing the intensity of public hype, I think this is something that India exploited by further continuing the same policy, and they are trying to, जिसको उर्दू में कहते हैं नाज़रीन, कि हमारी एक छेड़ बना के they behave the same way. So हमें initially, I think, as a nation, we need to understand that why we are so much eager to shake hands with them. We should not be forcing India. We should not be highlighting this issue. Yes, it is unprofessional on the part of the referee, and we rightly highlighted the complained about him in International Cricket Council. But this is something that should have been taken as usual. And Pakistan, I know and I'm sure the future holds. A future is there for Pakistan. The future opportunities will be there, and Pakistan can reciprocate at its own appropriate time and the manner in which Pakistan wishes to. But I think we need to understand that we should not light up things that are very common and kind of वो चीज़ें हैं जो ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं. We need to focus on sports. We need to focus on institution building. We need to focus on strengthening ourselves and therefore making our rivals come to their knees. Instead of us shouting, we need to act more. Thank you so much, Nazin, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.